Uh, we are discussing electrochemistry, and as I recall, we in last lecture we have discussed electrochemical cell, that is galvanic cell. We have seen the construction, working principles, and related topic with this galvanic cell. So what we have discussed, just we'll have the recap within 5 minutes, and then further we'll go ahead with today's topic, what is planned. Now, in last lecture we have seen that is electrochemistry has 3 sections. First is fundamental section, second is core concept, and third section is related with applications. पहले सेक्शन में फंडामेंटल डेफिनेशंस देखे हमने, और सेकेंड सेक्शन में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is the cell which converts electrical energy into chemical one, and at the same time chemical energy into electrical one. That conversion is done here in this electrochemical cell. And these are 2 types, that is electrolytic cell, which converts electrical energy into chemical energy, and galvanic cell, also known as Daniel or voltaic cell, which converts chemical energy into electrical energy. So that is the what we have seen here in this part. दोनों सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गैल्वेनिक सेल हो, दोनों सेल के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग देखा. इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस is the principle, is the reaction in electrolytic cell. We have seen electrolysis of fused NaCl. We have seen electrolysis of aqueous NaCl, and we got a different product for both of them. Then we have seen quantitative aspects, that is the charge, coulomb, that is Q is equal to I to T. The number of moles of electron, Q upon 96500 coulomb. Then we have seen mole ratio, that is the number of moles of product formed in half reaction upon number of moles of electrons required in half reaction. And then onwards, we have seen how to calculate the number of moles. Furthermore, we have started with galvanic Daniel voltaic cell. And in last lecture, what we have seen regarding this galvanic Daniel and voltaic cell is nothing but we have seen the construction of the cell, working of the cell, cell reaction, cell representation, a short way how to represent the cell reaction from cell representation, and cell representation from cell reaction. That's the part what we have seen in last lecture. जहाँ तक मुझे याद आता है, इतना सारा पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और जस्ट चलते चलते हमने छोटा सा पार्ट जो डिस्कस किया था, that is called electrode potential or cell potentials. One second, we'll take over that topic. That is, you can say potential. So cells के अंदर जो 2 potentials आते हैं, number 1 is the electrode potential, and number 2 is nothing but you can say cell potential. Okay, so we have this one. So we have electrode potential and we have cell potential. ये दोनों potential हमने वहाँ पे discuss किए हुए. Okay. Now, what is this electrode potential? We have seen this electrode potential का definition हमने देखा. It is a difference of potential between the metal plates and the solution around it when it is dipped in its own uncontaining solution, and that is nothing but the electrode potential. तो हर एक electrode का अपना potential होता है. So we calculate the electrode potential by this one, a single electrode. पर किसी भी cell के अंदर 2 electrodes होते हैं. Single electrode is called as a half cell, and another single electrode is called as another half cell. So in this what we have seen electrode potential, that is the difference of potential between the metal plate and the solution around it. It's called as, you can say, electrode potential. What is cell potential? We have seen that cell potential is the difference of potential between the electrodes, that is cathode and anode, at the given conditions. That is nothing but the cell potential. So cell potential is given like that. What we are saying, this is cell potential. So cell potential is nothing but that is also called as EMF of the cell. Cell potential is equal to EMF due to oxidation plus EMF due to reduction. So this is the formula, best important formula what we have seen. But हमने ये भी इसके अंदर देखा कि किसी भी element का oxidation potential must be equal to reduction potential. ये हमने देखा. और इसके अंदर थोड़ा सा चेंज हमने देखा, oxidation is equal to EMF of reduction. इसके अंदर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब in order to understand or to get it well, हर मेटल के केस में उसका ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रिडक्शन और रिडक्शन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन होता है. उसके लिए मैंने रिएक्शन दिया था लास्ट टाइम, दैट इज Zn gives you Zn plus 2 electrons. ये मिलता है. Zn gives you Zn plus 2 electrons. And this is the oxidation reaction. तो ये oxidation reaction. So
This is the zinc metal which goes for the oxidation. This metal also goes for the reduction. When this Zn plus plus reduces to electron goes for the reduction. So this is the reversible reaction. Reversible reaction. So any metal which can go for oxidation can go for reduction. The metal which can go for oxidation can go for reduction. And this is the very important concept thing which has to be understood. Every element almost can go for oxidation, can go for reduction, depend upon with which another metal we are making its electrode or we are using with whom, वो depend करेगा. And that's why हर substance का जितना oxidation होता है उतना ही उसका reduction होता है. Sign gets reversed. Sign gets reversed. तो अगर oxidation plus है तो reduction minus होता है, या अगर oxidation minus है तो reduction plus होता है. So this is what we can see. तो किसी भी element का, और ये जो values है ना, these values are decided by hydrogen electrode. मतलब all these values are decided by the hydrogen electrode because they are compared with hydrogen electrode, and that's why it is called as a primary electrode. चैप्टर थोड़ा सा आगे जाएगा तो वहां पे आएंगे हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो वो उसके अंदर देखेंगे. जहाँ पे हम जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, दिस इज यू कैन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन एंड दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन. सो वी हैव दिस. सो दिस फर्स्ट एंड दिस सेकंड. तो एवरी सेल हैज दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ये किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हाइड्रोजन के साथ ही मेजर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है एंड उसका वैल्यू निकाला जाता है. सो किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन के साथ मेजर किया जाता है. जितना उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उतना ही उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है. सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों सिमिलर होते हैं. डिफरेंस किस बात का होता है? डिफरेंस होता है दैट इज चेंज ऑफ द साइन. मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और अगर उस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है विद हाइड्रोजन देन उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है. दैट्स द मेन डिफरेंस व्हाट वी हैव हियर. सो दिस इज व्हाट वी कैन से अकॉर्डिंगली वी गॉट हियर पोटेंशियल. और इसके कारण से देखिए कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला के अंदर यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सो दिस ऑक्सीडेशन इज रिप्लेस्ड बाय रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन प्लस है तो ऑक्सीडेशन प्लस शुड बी रिप्लेस्ड बाय माइनस रिडक्शन. तो ये यहाँ पे आएगा. अभी हम अच्छी तरह जानते हैं ऑक्सीडेशन occurs at anode and this occurs at cathode. तो आप कैथोड एनोड भी यूज करेंगे उसी तरीके से आ जाता है. तो वो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है, दैट इज EMF of cell is equal to this is here oxidation is replaced by reduction जो मैंने किया था ऑलरेडी. सो दिस इज माइनस EMF of reduction, और ये रिडक्शन कहां पे? एनोड पे, प्लस दिस इज EMF of reduction, और ये रिडक्शन किसका है? कैथोड का है. अब ये इस तरफ लेके जाते हैं हम लोग. तो EMF of cell is equal to EMF of reduction. ये पहले लिया हमने, that is the cathode, and this is आगे लिया, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस EMF of reduction at anode. So this is the formula what we get here. तो अभी ये लिखने की जरूरत नहीं होती. जैसे हम लोग आगे जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये कैथोड एनोड लिखने की जरूरत नहीं है. किसी भी सेल के अंदर देखेंगे हम लोग तो जो हायर वैल्यू होता है that has to be on the left hand side और लोअर होता है that has to be on the right hand side, because this is the reduction of anode that naturally goes for the reduction. That's why its reduction potential is higher and its reduction potential is lower. तो ये आपको सामने आएगा किसी भी सेल के अंदर, बट दिस इज द फॉर्मूला जो आपके रेफरेंस के लिए होना चाहिए. इस तरीके से फॉर्मूला होता है EMF of the cell. यहाँ तक हमने एक्चुअली डिस्कस किया. नाउ इसी को हमें डिस्कस करना है कि दैट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल. सो द नेक्स्ट हेड इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल. Standard potential. So we have here that is called as standard potential. See, there are two different potentials. One is a normal potential, that is EMF of the cell, and the standard EMF of the cell. Standard potential. Standard potential is at the standard conditions. क्या होते हैं standard conditions? So number one, concentration should be 1 molar. See, concentration should be 1 molar. Then temperature should be 298 Kelvin. And pressure should be 1 atm. So this is what we can say pressure. So these conditions are considered to be standard. So whenever that reaction occurs at 1 atm pressure, 298 Kelvin temperature, and unit molar concentration of solution, these are called as standard conditions. और इस conditions में जो potential होता है सेल का, that is called as standard potential. तो जिस तरीके से नॉर्मल पोटेंशियल हम ऐसे दिखाते हैं, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये फार्मूला लिखेंगे पहला. दिस इज मैं इसे पहला फार्मूला कहता हूँ और इसे मैं दूसरा फार्मूला कहता हूँ. See, this is the first formula जो बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ही बेसिक है. किसी भी सेल का EMF और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू EMF ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस EMF ऑफ रिडक्शन. उस सेल के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड है उनका, और उसी को हम फाइनली बेसिक यूज करते हैं. अभी देखिए, जहां तक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात है, ये फार्मूला हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे.
हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, बिकॉज यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के अंदर, और फाइनली यही फॉर्मूला आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया है। बट कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहला फॉर्मूला ये तैयार होता है, एज पर द डेफिनेशन, एज पर द कॉन्सेप्ट, पहला फॉर्मूला तैयार होता है, ये मॉडिफाई होता है इसके अंदर। सो दैट इज व्हाट वी हैव, तो पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। तो अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात आती है, ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग? सो दिस इज, यू कैन से, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अब देखिए, दिस इज ईएमएफ ऑफ सेल, दिस इज स्टैंडर्ड और ईएमएफ ऑफ द सेल। मतलब ई नॉट लिखेंगे, ई नॉट, दिस नॉट इंडिकेट्स द स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन ये आपको, ये पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला इस तरीके से देखते हैं हम, ये वाला। तो ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ रिडक्शन minus standard EMF of reduction. So this is absolutely cathode and this is absolutely anode. So this is the other formula. So this is the first and this is the second formula. That is called as standard potential or standard EMF of the cell. क्या definition होता है standard potential का? The electrode potential or difference of potential between the two electrodes at standard condition, that is 180 pressure to 90 Kelvin temperature and unit molar concentration of the solution, is called as standard potential or standard EMF of the cell. Standard EMF के लिए condition standard होते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि that is concentration of all the substances, किसी भी सेल के अंदर जो concentration यूज करें हम लोग, that should be 1 molar. 1 molar is the standard concentration. Temperature should be 290 Kelvin and the pressure should be 1 atm. Then the potential measure of the cell or the potential of that substance must be called as standard potential. That may be of electrode or that may be of the cell. So this is, you can say, standard EMF of the cell. This is the standard EMF of oxidation, standard EMF of reduction. So E naught, not हटा देंगे तो this is just EMF of oxidation, और E naught लगा देंगे तो standard EMF of oxidation इतना change होता है उसके अंदर. So that is what we can say standard EMF of the cell. So whenever chemical reacting in a cell occurs at the standard conditions, that becomes standard potential. So standard electrode potential is there, standard EMF of the cell is also there. So दोनों concept वहाँ पे exist होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखे. That is called standard potential of the cell. Clear with this? इसी के अंदर how to calculate the EMF of the cell, वो भी उसके अंदर आता है via the Nernst equation. So let's move to the next, called as Nernst equation. यहाँ तक दोस्तों किसी को कुछ डाउट नहीं है? So we have to go ahead with Nernst equation. Okay, so Nernst equation. Nernst is one of the important scientists. He's a very genius scientist who has given the formula to calculate the EMF of the cell as well as to calculate the potential of the cell. तो सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करने की बात आती है या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करने की बात आती है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करने की बात आती है, तो वहां पे नर्न्स इक्वेशन, नर्न्स नाम का साइंटिस्ट आता है जिसका फार्मूला हमें डिस्कस करना है. तो we have to discuss the Nernst equation. So we have to discuss the Nernst equation. What is this Nernst equation scenario? According to Nernst, ये सीधा इक्वेशन है, उसके अंदर हम देखेंगे. So electrode potential, EMF of electrode. तो ये EMF of electrode क्या होगा? That is, you can say standard EMF of electrode minus you can say RT and F ln concentration of product upon concentration of reactant. ऐसा फॉर्मूला आता है, ऐसा फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूला हम लोग रिएक्शंस के लिए लागू करते हैं. इससे अगर हमारा ऐसा रिएक्शन है, A moles of A reacts with B moles of B produces C moles of C plus D moles of D. This is the chemical reaction, which is reversible reaction. Applying law of mass action, chemical constant जो होता है इस reaction का chemical constant होता है K is equal to concentration of C raised to C, concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. This is equation one what we get here. So अभी आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ये इक्वेशन कैसे आया. मैं आपको रेफरेंस दिलाना चाहूंगा. While going through the 11th standard, we have seen chemical equilibrium name chapter, जिसके अंदर हमने देखा कि जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है हमारे सामने, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, तब जाके we have this equation. ये इक्वेशन मिलता है हम लोग को. This is called as chemical equilibrium constant. This K is nothing but the chemical equilibrium constant. Or how and what is the scenario?
A moles of A reaction कैसे पढ़ा जाता है? A moles of A reacts with B moles of B, produces C moles of C and D moles of D. इस reaction के अंदर small letters A, B, C, D indicates number of moles and capital letter indicates the substances. कोई भी substance, जैसे कि ये general equation है ना, मतलब ये generalized equation consider किया, जैसे कि हम कह सकते हैं कि N2 plus thrice H2 produces twice NH3. Does the reaction खत्म हो रही है? तो नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा कैसे है? तो नाइट्रोजनिक सब्सटेंस है, हाइड्रोजनिक सब्सटेंस है व्हिच इज डिनोटेड बाय A, B लाइक सब्सटेंसेस, तो ऐसा होता है. सो दिस इज वेरी जनरलाइज्ड इक्वेशन जिसके अंदर स्मॉल लेटर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मोल्स एंड कैपिटल लेटर इंडिकेट्स द सब्सटेंस. तो इस इक्वेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसका केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. इट इज द रेशियो ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को मैं आपको बता रहा हूं. इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो इसे पढ़ा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू सुटेबल पावर. पावर कौन है? नंबर ऑफ मोल्स. पावर कौन है? नंबर ऑफ मोल्स D. दिस D is the substance taken in square bracket and this D is the number of moles goes to the power. So we got this equation in this sense. तो chemical equilibrium constant का definition ये कहता है it is the ratio of the product of, यहाँ पे product है, the multiplication है, product of concentration of reactant raised to suitable power to the product of concentration of reactant raised to suitable power. ये हमेशा ऐसा ही होता है. ये हमने प्रूव किया है केमिकल इक्विलिब्रियम 11th स्टैंडर्ड का, तो एक बार आप देख लीजिएगा. बट किसी भी इक्वेशन को लागू करते हैं तो ऐसा आ जाता है. दिस इज नथिंग बट द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो यहाँ पे आ जाता है. तो मैं इंस्टेड ऑफ दिस ये मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट इज यू कैन से ln k ये भी लिख सकता हूँ. अभी मुझे क्या अगर फाइंड आउट करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिखा है. इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एक इलेक्ट्रोड पे होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे इलेक्ट्रोड पे होता है रिडक्शन. सो अगर मैं उस हिसाब से लिखना चाहूंगा तो आप देखिएगा दो चेंजेस करता हूं. यहाँ पे दिस इलेक्ट्रोड इज ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करता हूं मैं. EMF ऑफ ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ ऑक्सीडेशन माइनस RT अपॉन NF. RT NF ln. अभी K के बदले ये आएगा, K के बदले क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू C, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू B. दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन सी. अभी इसके अंदर भी एक खास बात होती है कि दिस इज द ln. ln का मतलब होता है log base E. ln is nothing but log base E और log base E का वैल्यू होता है 2.303 into log base 10. ये होता है, ये बहुत बेसिक और फंडामेंटल फॉर्म्स है जो हमें आप जानते हो अच्छी तरह. ln log base E को अभी ln कहते हैं. log base E में थोड़ा सा पुराना हो, जैसे आप ब्रदर को आजकल ब्रो कहते हो, उसी तरीके से ये log base E को ln कहा जाता है. आजकल कोई नहीं कहता log base. It has to be called as a ln. तो ln is log base E और इसका वैल्यू कितना होता है? 2.003 log base 10. So instead of this we can put this value यहाँ पे रख सकते हैं. So this equation will take the form that is EMF of oxidation is equal to standard EMF of oxidation D minus 2.303 RT upon NF. यहाँ पे log base 10 आएगा because देखिए ln के बदले हमने ये 2.0 log base 10 डाला. 2.0 इधर लिखा मैंने log base 10 और here concentration of C raised to C, concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. ऐसा फॉर्मूला आ जाता है. So this is the formula what here by which we can calculate the EMF of oxidation electrode by Nernst equation. So Nernst equation is this. Nernst equation is this. ये सीधा दिया है. Nernst equation कैसा डेवलप होता है इसी चैप्टर में आगे देखेंगे. एक्चुअली उनको पहला देना चाहिए था बुक के अंदर, लेकिन आपने बुक में वो थोड़ा आगे दिया है. दैट इज यू कैन से थर्मोडायनामिक्स ऑफ दिस गैल्वेनिक सेल, जहां पे हम लोग गिब्स एनर्जी की बात करेंगे. जो थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस किया था यहाँ पे उसका थोड़ा सा रेफरेंस दे. तो वी गॉट दिस इक्वेशन. तो समझ रहा है सबको शायद. तो ये Nernst इक्वेशन जिस तरीके से उस तरीके से आपको लर्न करना है. जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, हाँ कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जैसे फॉर्मूलाज ऑफ एक्सपेंशन होते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसेस होते हैं, उसी तरीके से ये Nernst इक्वेशन सीधा लर्न करना है आपको. मैं बस मॉडिफाई करते जा रहा हूं. Nernst इक्वेशन बेसिक यही है, उससे मॉडिफाई करते जा रहे हैं हम लोग अपनी तरीके से, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से. सो दिस इज व्हाट वी कैन से. क्लियर? नाउ इसे क्या और मॉडिफिकेशन होते हैं, बिकॉज़ दिस इज द पोटेंशियल ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल देखा हमने. सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन. अभी कौन हो सकता है? रिडक्शन भी हो सकता है. बट इसके अंदर भी एक फर्क आता है. इसके अंदर हर चीज का मीनिंग है, हर चीज का मीनिंग है. व्हाट इज दिस R? R is a gas constant, T is temperature, N is the number of moles of electron, F is a Faraday. इसके अंदर के हर चीज का मीनिंग है. तो इसके अंदर देखिए R का वैल्यू कितना लेंगे?
R is equal to 8.314 joule, 14 joule. This is the value of R. उसके बाद कौन है T? T टेम्परेचर कितना लेंगे? 298 केल्विन लेंगे हम लोग टेम्परेचर. N is nothing but number of moles of electron. Number of moles of electron. Okay. And what is F? F is Faraday. F is Faraday. And this Faraday is nothing but 96500 coulomb. 96500 coulomb. 1 Faraday is 96500 coulomb. ये होता है. तो ये अगर सारे वैल्यू पुट कर सकते करते हैं तो this value comes to be, that means RT upon NF. तो इसके अंदर R कितना है? 8.314 जूल. टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन. ओके. N कितना है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. फैराडे कितना है? 96500 जूल कूलम. ये अगर कैलकुलेट करते हैं तो this value comes to 0.0592 इतना आ जाता है. We got this value, that is 0.0592 इतना वैल्यू आ जाता है इस फैक्टर का RT upon NF. तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं. RT upon NF के बदले ये वैल्यू पुट कर सकते हैं. मतलब खास करके F के बदले N तो N रखेंगे. So finally this equation becomes, that is EMF of oxidation is equal to standard EMF of oxidation minus 0.0592 upon N log base 10 concentration of C raised to C, concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. This is the final formula what we get here, called as a Nernst equation, which is useful to calculate, the EMF of the oxidation. EMF of the oxidation. यह फॉर्मूला है जिससे हम लोग EMF निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन EMF. सिमिलर वे से हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रॉन का. वो कैसे आप देखिए. सो हियर EMF of reduction is equal to standard EMF of reduction. बस ऑक्सीडेशन को रिडक्शन से सब्स्टिट्यूट करके चलिएगा. सो यहाँ पे रिडक्शन आया माइनस 0.0592 अपॉन n log base 10 K या फिर ये वाला, that is concentration of C raised to C, concentration of B raised to D upon concentration of A raised to A, concentration of B raised to B. This is second formula what we get here according to Nernst equation. तो दो फॉर्मूले हो गए. किसी भी सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. एक इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड जहाँ पे रिडक्शन होता है. So this is the Nernst equation to calculate the electrode potential of oxidation electrode, और this is electrode potential of reduction electrode. So दोनों का हम लोग निकाल सकते हैं this formula से. अभी एक बार हम लोग reduction potential of oxidation reduction निकालते हैं तो फिर आता है oxidation reduction EMF of the cell. So we have to calculate the EMF of the cell. So by this formula अगर हम लोग EMF of the electrode cell निकालना चाहेंगे, so this will be like this. You can say EMF reduction oxidation will be replaced by cell. The EMF of cell is equal to standard EMF of cell minus 0.0592 upon n log base 10 concentration of C raised to C, concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. ऐसा आ जाता है. Concentration of B raised to B. We got this formula. So these are the three formulas which are useful to calculate the EMF of the oxidation electrode, EMF of the reduction electrode, and this is the EMF of the cell by using Nernst equation. Basic Nernst equation is this one. यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, उसी तरीके से सेल का भी निकाल सकते हैं हम, जिसके अंदर this is the EMF of electrode of cell, this is the EMF of the standard EMF of the electrode of cell. R is a gas constant, T is a temperature, N is the number of moles of electron, F is the Faraday which indicates the charge, the coulomb, Ln, and this K is a chemical equilibrium constant जो मैंने यहाँ पे आपको derive दिखा दिया for this reaction. So this is the way how we can calculate the potential of the cell or electrode potential of the cell. Clear? कोई doubt है किसी को इसके अंदर? So that's what we can say. By using the Nernst equation, we can calculate the cell potential by this formula. इस formula. अभी इस formula के अंदर ये जो factors आते हैं वो कैसे आते हैं? ये हमें discuss करना है while we enter into the thermodynamics of this galvanic cell. After all, galvanic cell के अंदर reaction involved है. Galvanic cell के अंदर conversion of energy है. And we are dealing with this one. So how the energy is converted here and what are the thermodynamics? मतलब how the energy changes, that is what we are dealing with this one, and that is what we will discuss here. So let's move towards thermodynamics of galvanic cell. ये इसका screenshot ले सकते हो आप लोग या फिर आपके बुक के अंदर भी है, लेकिन थोड़ा सा मैंने सारे फार्मूला फाइनल फॉर्मेट में दिया है.
आप थोड़ा उसके आगे पीछे सारे फॉर्मूला देख सकते हो। क्लियर विद दिस? ओके, सो लेट्स मूव thermodynamics of this galvanic cell. थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। आप देखिएगा दो, मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, बट गैल्वेनिक सेल मतलब डैनियल सेल मतलब वोल्टाइक सेल, तीनों सेल उसके अंदर आ जाता है एंड वी हैव टू डिस्कस देयर थर्मोडायनेमिक्स। तो हमें उसी का थर्मोडायनेमिक्स वहां पे डिस्कस करना होता है। सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। Thermodynamics matlab it is a branch of chemistry where we are dealing with a relation between heat energy and other forms of energy. Thermodynamics is the name of our chapter. हमारे चैप्टर का ही नाम है। उसके अंदर हम डील क्या करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं? तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर ही एक ऐसा चैप्टर है जो हीट और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को हीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हीट को अदर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसी के साथ थर्मोडायनेमिक्स जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी आता है वर्क के साथ हम डील करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ये उसी का पार्ट है। मतलब how the heat is obtained, how the work form is obtained out of this electrochemical cell or with this galvanic cell and Daniel voltaic cell, ये हम यहाँ पे देखते हैं। And that is nothing but the Gibbs energy, यहाँ पे आ जाते हैं। तो thermodynamics मतलब we have to discuss the Gibbs energy. So the main head is nothing but Gibbs energy. Gibbs energy. अभी Gibbs energy head क्यों दिया हमने? Because finally एक रिलेशन समझेगा। There are different forms of energy. और हम अच्छी तरह जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब यह है कि एनर्जी ना हम तैयार कर पा रहे हैं, ना एनर्जी हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, एक एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करता है। और स्पेशली वी आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड टू ऑब्टेन द वर्क। द फाइनल इंटेंशन इज दिस, हाउ दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड टू ऑब्टेन द वर्क, व्हाटएवर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, that may be electrical form of energy, that may be chemical form of energy, that may be heat form of energy, or that may be sound, whatever the form of energy, how we can obtain the work out of that. So work का definition आपको physics में अलग मिलता है। आपने देखा हुआ है फिजिक्स में वर्क का definition है force into displacement। वर्क का definition आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी डिस्कस किया है, वो अलग है। और वर्क का definition यहाँ पे देखिए, तो इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री में definition of work is different, so and that is nothing but the Gibbs energy। अभी गिब्स एनर्जी क्या है? तो गिब्स एक साइंटिस्ट है जो ये कहता है कि whatever the free energy which is available to do work is called as Gibbs energy। गिब्स एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब गिब्स एनर्जी, है ना? जैसे मैं कई बार ऐसा मजाक से कहता हूँ कि मानो हमारे डैड के पास बहुत पैसा है ना, आज की तारीख में पैंडेमिक चल रहा है तो सिचुएशन खराब है सबके, नो डाउट एट ऑल, बट थोड़ा सा इमेजिन कीजिए ना, डैड के पास बहुत पैसा है, वो आपके काम का तब तक नहीं जब तक वो आपके पैकेट में नहीं आता है ना? नहीं तो हम लोग कॉलेज जाते हैं और पॉकेट मनी बहुत कम मिलता है, सो मजा नहीं आएगा कुछ। और टेक इट एज ए एग्जांपल, नॉट डोंट टेक इट दैट मच सीरियस, मजाक से कह रहा हूँ। तो इसी कारण से डैड के पास बहुत पैसा, जब तक हमारे पैकेट में नहीं आएगा तो हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे, कोई काम का नहीं। उसी तरीके से बहुत एनर्जी है इस विश्व में, बहुत एनर्जी की बहुत फॉर्म है, बट जब तक हम उन्हें वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते, वर्क के लिए डिप्लॉय नहीं कर पाते, वो कुछ काम के है नहीं। तो हम टू व्हीलर चलाते हैं, हम फोर व्हीलर चलाते हैं, हम लोग कई सारे मशीन चलाते हैं, सब के अंदर हम करते क्या है? सबके अंदर हम लोग वर्क में कन्वर्ट करते हैं उस एनर्जी को, व्हाटएवर द फॉर्म इज दैट। दैट्स व्हाई गिब्स एनर्जी, गिब्स यही कहता है कि दुनिया में बहुत एनर्जी है, उसमें से जो एनर्जी फ्री होगा, जो हमें वर्क करने के काम में आएगा, उसी को तो फ्री एनर्जी कहा जाता है, उसी को तो वर्क एनर्जी कहा जाता है, उसी को तो गिब्स एनर्जी कहा जाता है। बहुत एनर्जी है, इट्स ऑफ नो यूज। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारा हीट एनर्जी है, बहुत सारा एनर्जी स्टोर्ड उसके अंदर, हम उसे मशीन में पुट करके उसे वर्क में कन्वर्ट करते हैं। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर का एनर्जी हम मशीन के थ्रू उसे वर्क में कन्वर्ट करते हैं, इससे हमारा गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स का डेफिनेशन अप्लाई होता है।
So Gibbs energy is the free energy which is available to do work. That is called as Gibbs energy. So what is the Gibbs energy of galvanic cell then? So galvanic cell के हिसाब से work का definition आ जाता है. That is according to electrical energy. Definition of work. Work is equal to, that is total charge into cell potential. See, the product of total charge and the cell potential is called electrical work. तो वर्क थर्मोडायनामिक्स में भी मिलता है, वर्क फिजिक्स में भी मिलता है, वर्क इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री में मिलता है. सो इलेक्ट्रिकल वर्क का डेफिनेशन देखिए. इलेक्ट्रिकल वर्क का डेफिनेशन है टोटल चार्ज इनटू सेल पोटेंशियल. तो वर्क इज नोटेड बाय W, नो डाउट, आप जानते हो. ओके, एंड टोटल चार्ज इज नोटेड बाय M into F. F indicates the charge. F is the Faraday, or 1 Farad is equal to 9650 coulomb. Coulomb is the charge. So Faraday represents the charge. N is the number of moles of electron. तो एक मोल के लिए एक Faraday, 2 मोल्स के लिए 2F, 3 मोल्स के लिए 3F, so onwards. N number of moles के लिए NF. Total charge EI into cell potential, मतलब EMF of the cell EI. So this formula what we get here. So therefore we can say W is equal to NF into EMF of cell ऐसा आएगा. So this is the formula what we get here. क्लियर, ये पहला फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज वर्क का फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है. नाउ ये तो इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला है. हम गिब्स एनर्जी की तरफ चलते हैं, जो फिजिक्स में क्या, सॉरी थर्मोडायनामिक्स में कहते हैं. थर्मोडायनामिक्स में गिब्स क्या कहता है? गिब्स कहता है द फ्री एनर्जी व्हिच इज अवेलेबल टू वर्क इज कॉल्ड एज गिब्स एनर्जी. एंड अकॉर्डिंग टू गिब्स एनर्जी, सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू गिब्स के हिसाब से वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी. डेल्टा जी इज अ चेंज इन गिब्स एनर्जी. शायद आप में से कुछ लोगों को याद आता होगा, वी हैव सीन थर्मोडायनामिक्स. माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी. ये इस तरीके से इसके अंदर आ जाता है ना. वर्क इज इक्वल टू दिस वन, और वर्क इज इक्वल टू दिस वन, तो वर्क इज इक्वल टू दिस वन. दोनों का, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दोनों का LHS सिमिलर है, RHS must be similar, so that's how we can say minus delta G is equal to NF EMF of cell. ऐसा आता है, EMF of cell आ जाता है. Going ahead, माइनस उधर शिफ्ट करता हूं मैं, तो delta G is equal to minus NF EMF of cell. This is the formula what we get here for the work. देखिए, हमने जो नॉन इक्वेशन देखा उसके अंदर NF आ रहा था, कहां से आ रहा है? तो इस तरीके से आ रहा है. That is what we can say. अब ये फॉर्मूला यहाँ पे रुकता नहीं, और आगे चला जाएगा, हम और आगे उसके अंदर चले जाएंगे. Okay. Now, what's the next? Yeah, there is a standard Gibbs. Standard Gibbs energy क्या है? ये अगर ये भी standard है, तो ये भी standard बन जाएगा. So when we talk about the standard one, at that time we can say standard Gibbs energy must be equal to minus NF standard EMF of the cell. So this is also we got it standard. And there is a relation between standard Gibbs energy given by Gibbs. So standard Gibbs energy delta G naught is equal to RT ln K. RT ln K. This is the standard Gibbs energy. ये इसके अंदर आपको मिल जाता है standard Gibbs energy. Okay. Now there is a relation between standard Gibbs energy and Gibbs energy. Okay. There is a relation between Gibbs energy and standard Gibbs energy. So we can say at equilibrium Gibbs energy equals standard Gibbs energy. Okay. So we can have here minus NF standard EMF of the cell is equal to plus RT ln K. This is at equilibrium. Okay, so here EMF of cell is equal to RT upon NF minus ln K. Is this the equation जो हमने देखा था? This is the equation हमने देखा था. यही equation हमने देखा था nonce equation के अंदर. So nonce equation के अंदर यही equation हमने देखा. That is you can say RT NF. So what is this R? R is a gas constant. T is the temperature. N is the number of moles of electron. F is the Faraday. जो इस फॉर्मूले से बनता है. So ये जो nonce equation बना हुआ है, this nonce equation is again based on this thermodynamics of galvanic cell given by Gibbs. तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं इस तरीके से. सो वी गॉट दिस वन. तो EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू माइनस RT NF ln K. अभी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम अच्छी तरह जानते हैं. ln का मतलब क्या होता है? ln इज इक्वल टू log base E, which is nothing but 2.03 into log base 10 K.
log base 10, तो ये यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें आएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू 2.03 RT अपॉन NF ln K, और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू, ये सॉल्व करते हैं तो 0.0592 अपॉन n ln K, ये 2.3 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ln है, तो ये इस तरीके से आएगा, या फिर log बेस 10K, और यहाँ पे हम log कर देते हैं ताकि यहाँ पे 2.303 लिख पाए। ln को log में कन्वर्ट करा तो 2.303 आए, सो 2.303 ये सॉल्व करेंगे जितना फैक्टर आ जाता है यहाँ पे log बेस 10K, ये फॉर्मूला आ जाता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। दिस इज कॉल्ड से thermodynamics of Gibbs energy, or thermodynamics of galvanic cell according to Gibbs energy. We can calculate the EMF of the cell, you can calculate the EMF of the electrodes. So that is what we get here. Clear with this? So that is what we have seen here for the thermodynamics and the basic how the electrode potential is developed in the cells. Now in tomorrow's lecture, we'll discuss reference electrode, how the potential is measured. Hope so everyone got it. Till then, bye bye. Thank you very much. See you tomorrow.